perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. So अपने को एक chord दे रखी है AB एंड सेंटर है O. इससे अगर अपन ने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा सपोज OM, तो अपने को प्रूव करना है कि AM इज इक्वल टू MB. सो क्या गिवन है अपने क्वेश्चन में, OM एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ आर परपेंडिकुलर. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AM इज इक्वल टू BM. So we will take these two triangles OMA and OMB. इन दोनों ट्रायंगल में now these two angles are 90 degree, so they both are equal, and OA is equals to OB, radii of the circle, same circle, and OM is equals to OM, the common side. Therefore by RHS these two triangles are congruent. What it implies? It implies that AM is equals to MB by CPCD, corresponding part of congruent.